Lalu Prasad Yadav's daughter Rohini Acharya has announced that she's quitting politics and publicly disowning her family. Now, this move comes a day after RJD's crushing defeat in the Bihar Assembly elections, where the party's seat tally dropped from 75 to just 24. Taking full responsibility, Rohini pointed fingers at Sanjay Yadav, who's a close aide of Tejashwi Yadav, and his associate Ramiz, claiming that it was on their instruction that she made this dramatic decision. Sanjay Yadav, a Rajya Sabha MP and key Tejashwi ally, is now at the center of a political storm. BJP leaders, meanwhile, did not waste a moment slamming the RJD leadership, Lalu Prasad Yadav, for allegedly pushing his own daughter to disown her family. नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था। हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं जिनका मनी मैनेजमेंट परिवार से ऊपर हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी के परिवार की राशि का मैनेजमेंट शुरू कर देता है किसी व्यक्ति का, तो वो परिवार से ज़्यादा करीबी हो जाता है और उसी का नतीजा है। पर इससे चुनाव को कोई मतलब नहीं है। हम पहले से जानते थे कि कोई बिहार का व्यक्ति जंगल राज पसंद नहीं करता है। उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन रोहिणी के आंख से आंसू गिरा है, यह बिहार के और देश की बेटियों के लिए, ये हमारी परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। आरजेडी में भी फूट की खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? अब उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मैं तो उसी को पटक के आई हूँ, 15 साल को जकीरा को तोड़ के आई। लालू परिवार में भी टूट की खबर है, रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से नाता तोड़ लिया। वो उन लोगों का अपना डिसीजन था, उन्होंने जितने वादे किए वो सब झूठे थे, तो होना ही था। उनकी पार्टी और उनका घर सब टूटेगा, क्योंकि उन लोगों का लक्षण ही यही है। उन लोगों ने ऐसा ही काम किया है जिससे सारी चीज टूटेंगी। देर से आया हुआ निकला हुआ अंदर का गुबार है, लेकिन जिस हिसाब से बिहार की जनता ने 2010 में ही इस परिवार को और इनकी नीतियों को खारिज कर दिया था, वो तो कहिए कि बीच में 15 में आ गए, 20 में किसी कारणवश, ये लगभग बिहार की जनता ने इस परिवार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। चूँकि इन लोगों को न कोई विज़न है, न कोई इन लोगों का सोच है, न कुछ नियत है। ये जनहित के मुद्दों से बगैर जात पात उन्माद वाली भाषा वाली प्रयोग करते थे, जिसको इनको मुँह की खानी पड़ी। So this is not the first time that a member of the Lalu family has cut ties with the family. In fact, this is the third time. Rohini Acharya is the third member in the Lalu family to do so. So she's also the daughter who had donated her kidney to Lalu Yadav when he was undergoing treatment and who has now been disowned by the family. She has made some scathing allegations against the family members. She has alleged that she was beaten at Tejashwi Yadav's behest. In fact, she has also named Tejashwi Yadav's close aide being the reason
for her quitting politics, and she has claimed abuse and assault by Tejashwi Yadav's aides. So some scathing allegations made by Lalu Yadav's daughter Rohini Acharya, who has quit politics, and she has also claimed that she has no family. Next comes Tej Pratap Yadav. So he's the Lalu Yadav's eldest son, and he has now floated a new party. Now this came after he was expelled from the RJD, and he was also disowned by Lalu Yadav himself, there were revelations about extramarital affairs, and the post was then deleted, but he was disowned by Lalu Yadav himself. He's the eldest son of the family, and after which he was also expelled from the RJD, and after which he floated his new party, even contested the Bihar elections, although he faced defeat in the Bihar elections. Next comes Aishwarya Rai, who is the ex-wife of the elder son of Lalu Prasad Yadav, Tej Pratap. She is the ex-wife, and she has split from the Lalu family. In fact, after divorce, she also made some scathing allegations against the family. She claimed that Tej Pratap Yadav is a drug addict and also a cross-dresser. In fact, not just Tej Pratap Yadav, she also made allegations against Rabdi Devi, that Rabdi Devi used to beat her. These were the allegations that were mentioned by Aishwarya Rai, who is the ex-wife of Tej Pratap Yadav. And now let's take a look at what Rohini Acharya has said to be the reason behind her quitting politics, and also saying that she does not have a family. She has blamed Tejashwi Yadav and also his aide behind this decision. Now she has named Ramiz, who is a close aide of Tejashwi, and he played cricket with Tejashwi Yadav. This person has been named by Rohini Acharya to be the reason behind her splitting from the family and disowning the family, and Ramiz headed Tejashwi's election war room. So crucial role was played by Ramiz in these elections, and of course it is pertinent to note the performance also that we saw of the RJD in these elections. Now Ramiz is the son-in-law of former Samajwadi Party strongman Rizwan Zahir. So he also has strong connections with the Samajwadi Party, and he faces 12 criminal cases including murder. So the close aide of Tejashwi Yadav also faces 12 criminal cases which also include murder. He is currently out on bail in a murder case. So Tejashwi Yadav's close aide, confidant, is also out on bail, and he is also facing murder charges. He allegedly humiliated Lalu's daughter Rohini Acharya, as is being claimed by herself, that she was humiliated, she was abused by Tejashwi Yadav's aide Ramiz, and she said that she was beaten with slippers at Tejashwi and his aide's behest, that is Ramiz. So these are the allegations that have been made by Rohini Acharya. She has mentioned these reasons for her quitting politics and also cutting ties with the Lalu family. She has mentioned Tejashwi Yadav and two of his aides for the reason behind her splitting from her own family, the Lalu Yadav family.